कैसे हैं बाकी? राज बेटे, कैन बी ओपन द विंडो? Just wait for 2 minutes so that everybody should come and then we can start. Okay? और कैसे हैं बाकी लोग? स्कूल देख के कैसा लग रहा है? स्कूल देख के कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। सर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और जैसे नॉर्मल हो गया बिल्कुल। 18 बिल्कुल नॉर्मल हो गया। वेरी गुड। संभव है जॉइंट। 18 people have joined. Okay. Let me check. What is the layout? Okay. और अब सारे दिख रहे हैं ना मुझे? वेरी नाइस। ये बाकी लोगों ने क्यों बंद कर रखी है विंडो? निशांत, वर्षा, देवरत्न, हर्षित, संभव, मौमिक, मुस्कान, प्लीज ओपन द माइक, ओपन द विंडो. Everybody has to open the window. Everybody has to open the window. So only 18 people have joined. Chalo, till now, what we will do? We will start with exercise. Are you ready? Say yes or no. Yes sir. सर Say yes or no. Yes, sir. चलो गेट Yes, अप sir. everybody. सारे लोग खड़े हो जाओ. सारे लोग खड़े हो जाओ और विंडो ओपन करके खड़े हो. Everybody will perform. Sorry.
Sorry, sorry. Can you see the video? Can you see Yes, the video? sir. Yes, sir. हाँ.
So, how you felt? कैसा लगा सबको? अच्छा, एक गायब भी हो गया अभी कोई। ऑल राइट। अच्छा, मैंने असाइनमेंट दिए थे किसी को? किसी को असाइनमेंट नहीं दिए थे? ओके ओके, राइट राइट। सो टुडे व्हाट वी हैव टू डिस्कस, टेल मी। Sir, new chapter we have to start. Sir, physical New activity chapter? and leadership. Okay, okay. So today what I will do, I will try to give the introduction, right? And then day after tomorrow, that is Monday, before Monday, I will send you the assignments. And then you have to prepare that assignments, right? Small 2-3 slides, and then we will go ahead. So I am sharing my screen to you, right? So that we can start with your class. अरे पूर्वी, चलो शांति पाठ करेंगे बाद में, है अभी नहीं करते, बाद में शांति पाठ। ऑल राइट, कैन यू सी माय स्क्रीन? ऑल राइट, no, this is not the presentation. Okay, yes. Physical activity and environment. This is the topic na today. Purvi? Hello? Can anybody reply? Sir, physical activity and leadership. Sorry. This is the topic na? Yes, sir. कोई और मुझे बता सकता है? आवाज कट रही है उसकी। Yes, sir. Top, physical activities and leadership training. Okay, so first we will try to understand the physical activities and environment, and then we will go to the physical activities and leadership. All right, just give me 1 minute so that I can do. Just a minute. हाँ बेटे, बोलो। ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है भाई? All right, can you see my screen? No, sir. Yes, sir. All right. So we are starting with the physical activities and environment, and leadership. I will talk to you later on with the adventure sports, right? So that is the different topic. So first we will start with the physical activities. ये आपको बड़ा दिख रहा है सबको? No, sir. So first of all, our man must be strong. सर आपकी स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा। कुछ नहीं दिख रहा है? नो सर। ओके। सर दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्या हुआ पूर्वी बेटा, दिख नहीं रहा है? सर सिर्फ
प्रेजेंटेशन ऐसा दिख रहा है मुझे, तो बाकी कुछ आप जो प्रेजेंट कर रहे हो वो नहीं दिखा मुझे। चलो मैं एक बार फिर दोबारा से प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है? चलिए, अब दिख रहा है? यस सर। ये अब मेरा पीपीटी दिख रहा है? यस सर। चलो, गुड, राइट. So we are talking about the physical activities, right? So first of all, our men must be strong. Then the religion will come afterwards. Be strong, my young friends. That is my advice to you. You will be nearer to the heaven through the football game than through the study of Gita. These are the bold words, but I have to say them. I love you. I know where the shoes pinches. I have gained a little experience. You will understand the Gita better with your biceps, with your muscles a little stronger. You will understand the mighty genius and the mighty strength of Krishna better with a little of strong blood in you. You will understand the Upanishads better and the glory of Atman, where your body stands firm on your feet and you feel yourself as a man. This statement was given by the great saint of India, Swami Vivekananda. Doing anything else before that, we should be strong enough to perform the duties. Even the religion, if you want to understand, if we really wanted to understand the Gita, Upanishads, or the other things, Swami Vivekananda emphasizes on the fitness of the body. If your body is fit, your body is strong, then you are able to experience each and everything in this world. I hope I have made it clear. Now, what is physical activity? Physical activity is any body movement that makes the muscles work and require more energy than resting. Right? जब हम रेस्ट पे होते हैं तो हमारा एनर्जी कंजम्पशन क्या होता है? बिल्कुल कम होता है. When we sit straight, our energy consumption increases. When we walk, again the energy consumption increases. So physical activity in any body movement, in that makes the muscles work and require more energy than the rest. Oh, what an idea, Sarji! Walk and talk. Walk and talk is what? You must try to complete the 10,000 steps in a day. If you are talking on the mobile, don't sit down. Walk and talk, so that your body should be always on the move. If you are on the rest, your body is not moving. No movement is there. It means you are not spending the calories which you have taken in. If you want to burn out the calories, you have to have the movement in the body. So physical activities is defined as any bodily movement produced by the skeletal muscles that requires energy expenditure. If any movement we do which requires energy expenditure, that all work we do that comes under the physical activity. So physical activity is mandatory for physical fitness, as
it strengthens muscles and make our body more flexible. Physical activity is mandatory for physical fitness. Now, what is physical fitness? A capacity to perform a well-vigorous form of activities without unduly tired, and still has some energy to meet with the emergency task. It also strengthens our muscles. It prepares our muscles to perform the given different task and makes the body more flexible. What is the meaning of more flexible? Your range of movement of your joints should be maximum. Hands up, पीछे, दाएं, बाएं. The range of the movement is more. So that prepares the body, get prepared with the help of physical activities. Different physical activities requirement for different age groups. So there are set of activities are set for the different age groups. Now, the set of exercises which we need for infant children. आपने देखा है जब दादी माँ जब बहुत छोटे थे, न्यूली बॉर्न, तो हमारी मसाज की जाती थी. फिर दादी माँ हमको पैरों में डाल के लिटा करके एक हाथ को इधर से ऐसे खींचना, पैरों को इधर मोड़ना, दूसरे पैर को ऐसे मोड़ना. वो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़े, क्रोलिंग शुरू हो गया, वॉकिंग शुरू हो गया, फिर हम स्कूल में आ गए तो हमको डिफरेंट टाइप ऑफ दी अदर फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज हैज बीन इंट्रोड्यूस. एलकेजी यूकेजी में थे डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस. फर्स्ट सेकंड थर्ड में डिफरेंट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस. फोर्थ में सिक्स्थ में आया तो डिफरेंट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस. 6 to 12 में आ गए तो डिफरेंट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस. राइट? सो दैट डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज रिक्वायरमेंट फॉर different age groups is there, so that the motor skills, motor movements can be ensured. Either it is gross motor movements or fine motor movements, and later on physical fitness. Minimum 1 hour daily workout for children up to age group of 18 and 40. 1 hour for children. Minimum 1 hour for the children. Those who are younger, they require at least 1 hour play every day, whereas children, those who are become the young adult, the age group between 18, they require 45 minutes well vigorous form of activities. Right? Type of physical activities. Now, what type of the physical activities are there? Lifestyle physical activities. What is lifestyle physical activities? These activities are moderate in intensity, can be done by the individual on their own. Walking, like walking, stair climbing, daily household work, जो हमारे घर में daily routine work होता है, gardening. These all are the activities which can be called lifestyle physical activities. Now, what is moderate intensity? Intensity means at what pace you are performing, what kind of the load you are taking. So that should be moderate kind. Vigorous physical activities. These vigorous activities or vigorous physical activities requires more energy than the moderate lifestyle type of activities. These are the activities which are vigorous in form, hard, tough, good for building physical fitness, especially cardiovascular fitness. Various vigorous form of physical activity: running, jumping, playing football, doing weight training. Vigorous form of activities. Recommended for the children 3 to 4 days a week for approx half an hour. ये एक्टिविटीज कितने दिन? 3 से 4 दिन. कितना? आधे 30 minutes to 45 minutes. Well vigorous form of activities is needed. Flexibility exercises. The physical
activities में flexibility exercises. It is the activity which makes joint move freely, where we do stretching exercises, which improves our flexibility, increase mobility of the muscles. Sir, हाँ बेटा, सर आपका स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर दीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है क्लियरली। बड़ा कर दूं मैं? वेट ऑन, सॉरी, एक मिनट, हाँ एक मिनट, लेट मी सी, बाहर आ गया क्या मैं? Now can you see? Hello? Can you see? Rumisha? Sir, the same screen is visible. Now? Yes, sir, now इससे बड़ा होगा नहीं बेटा ये, I think. Sir, now it is clear. Okay, right, fine. ठीक है बेटा. So flexibility exercises, right? So it is the activity which makes the joint move freely. Range of motion, movement हमारे बेहतर हो, है ना? उसके लिए increase the mobility to muscle to allow the more movement around the joints. हमारा जो movement है वो ज़्यादा maximum range पे हो जाए, maximum range पे. Because for that we do the flexibility exercises, stretching exercises, improve flexibility, enhance performance in aerobic training. What is aerobic training? The exercises which we perform for the longer duration, right? So in that performance, it improves our flexibility and muscular coordination और muscular conditioning. जो muscles हमारी ज़्यादा देर तक काम करने के लिए तैयार हो जाती है, right? And it reduces the chances of injury. Once we do the stretching exercises, what happens? Our muscles get warmed up, and because of that, the elasticity of the muscles are ready to respond to the given task, ready to respond to the given exercise. That muscles get prepared, and because of that, the injury get reduced. All right. The next is muscles strengthening exercises. These all are the activities. So there are activities to build body strength. So what are the activities which can be developed or build the body strength? That is weight training, push-ups, sit-ups. ये सारी की सारी एक्टिविटीज किसकी है? जो हमारे मस्कुलर स्ट्रेंथ को इंप्रूव करती है. Now physical exercises. आपने अभी एक्टिविटीज के बारे में समझ लिया. Now physical exercises. Now the physical exercises are of two types. One is called aerobic exercise, and second is called anaerobic exercise. What is aerobic exercise? Any activity that uses large muscles group and causes the body to use more oxygen than at rest. That is called aerobic exercise. Or we can also say the exercises which we are performed for the prolonged period of time in the presence of oxygen, that is also aerobic exercise. For example, running, brisk walking, swimming. बगैर थके बगैर रुके एक लंबे समय तक एक्सरसाइज करना in the presence of oxygen, where the oxygen is used as a energy fuel. We inhale. When we inhale, oxygen goes inside, oxidation takes place, then the glycogen get developed, and that uses as a fuel for the activity. Now, what is aerobic exercises? In these exercises, it is the short duration activity, but high intensity activity. Short duration but high intensity activity, where body demands for oxygen exceeded the oxygen supply remain minimal. Oxygen exceeded the oxygen supply available. तो जो
इसमें क्या होती है, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, और इसमें मैक्सिमम जो हमारी एनर्जी हमको मिलती है वो हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिजर्व्स रहते हैं, जिनको हम एटीपी सोर्सेज बोलते हैं, वहां से हम लोग ये एनर्जी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुशअप्स लगाते हैं, वेट लिफ्टिंग, और द बेस्ट एग्जाम्पल इज 100 मीटर रेस, जहां पे ऑक्सीजन लेने की टाइम ही नहीं मिलता है एंड द एक्टिविटी गेट ओवर, सो दैट इज कॉल्ड anaerobic kind of exercises. So where the activity is last for shorter duration and the activity in the high intensity activity, and where the oxygen consumptions are not available as compared to the aerobic exercises, right? कोई डाउट हो तो बीच में पूछ लेना बेटा। Physical activities. Now again, this slide came here, no problem. According to the World Health Organization, physical activities means any effort involving the muscle skeletal system which entails a higher energy consumption than that requires during the rest. इसका मतलब क्या हुआ? Any effort involving the muscle skeletal system which entail a higher energy consumption, जो एक्सरसाइज हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हायर एनर्जी कंजप्शन हो रहा हो देन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द रेस्ट के कंपैरिजन में किसी भी एक्टिविटी में जहां पे हमारी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम्ड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एक्टिविटी। दिस डेफिनेशन देयरफॉर इंक्लूड्स नॉट ओनली सपोर्टिंग एक्टिविटीज, sporting activities, but also simple daily activities. Simple daily routine work is also counted as a physical activity. अगर आप घर में स्वीपिंग कर रहे हैं, it is counted physical activity. आप घर में अगर पोछा लगा रहे हैं, मॉपिंग कर रहे हैं, तो that is also physical activity. आप अपने कपड़े धो रहे हैं, physical activity. आप बर्तन साफ कर रहे हैं, physical activity. आप चटनी सिलवट्टे पे पीस रहे हैं, physical activity. Right? So simple daily activities such as walking, cycling, dancing, playing, gardening, housework, ये housework में आता है सारा। These all kind of the movements where the energy get consumed more in comparison to the rest, that comes under the physical activity. Okay? आज के लिए यहीं तक रोक दें। चलो एक स्लाइड और कर दो, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये कल करेंगे, टॉपिक अच्छा है, राइट? तो आज के लिए इतना ही करते हैं और बाकी कल करेंगे, ठीक है? ऑल राइट, लेट मी चेंज माय सेटिंग। हाँ, ओके, अब मुझे ये बताइए कि मैं आपको व्हाट्सएप पे सबको होमवर्क भेज सकता हूँ ना? एक बार विंडो खोलो 2 मिनट के लिए सभी लोग। Why these boys girls are not joining? 32 लोग हैं, इतने सारे लोग कहाँ गायब हैं? किसी को आता पता है? देवव्रत ने बंद कर रखा है, धनंजय ने बंद कर रखा है, भौमिक ने बंद कर रखा है, हर्षित ने बंद कर रखा है, निशांत गायब हो गया। ऑलराइट, बाकी सारे लोग ठीक है? अब ऑल आर फाइन? यस मैं सर। छोटे छोटे प्रेजेंटेशन दूंगा, ज्यादा लोड नहीं दूंगा, छोटे छोटे प्रेजेंटेशन, जिससे कि मैं भी उसको बता सकूं, आप भी अपना बता सके। तो जो भी चीज हमारी कमी होगी वो पूरी भर जाएगी, मेरी साइड से भी आपकी भी साइड से। तो जो भी कह पा रहा होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? दांत मत, नाखून मत खा बेटा। चलो, क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स। सर हाँ बेटू, बोलो बोलो। सर मेरा कोई सा भी व्हाट्सएप नंबर ऐड नहीं है ग्रुप पे। मैं कर दूंगा बेटा, मैं भूल जाता हूँ। आई विल डू दैट। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, दिस नंबर इज यू आर हैविंग इन द क्लास ना? हाँ सर, स्टूडेंट्स ग्रुप में है। ओके, आई विल डू दैट। ओके, थैंक यू सर। सर मेरा भी नहीं। 3 लोगों का, हाँ 3 लोगों का करना, आई विल, पूर्वी का भी। ऑलराइट, क्लोज योर आईज, join your hands and start Shanti Path.
ओम शांति शांति शांति। गॉड ब्लेस यू। आज मालूम है क्या हुआ? आज मैंने ना आपको अभी थोड़ी देर पहले ही ईमेल किया है, मालूम है? आज मुझसे गलती होते हुए बच गई।